फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन। नमस्कार, मैं हूं एम्ब्रोज और आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम्ब्रोज अंबेडकर। फ्रेंड्स, you are seeing that this is spoken class 3rd. Okay, now today if we have to speak English we must follow some certain steps, and that steps will lead us on the path of spoken English. Okay, that's why today we have the third structure, and the structure is today subject plus shall or will, and then be, and then other words. Okay, this is the basic structure which we are going to discuss, on which we are going to form important daily life sentences. And now, as I have said that short forms are very useful in a spoken English. That's why we see some short forms here, like I sell. It will be written as I'll. We sell. It will be written as well. Okay, they will. It will be written as they'll. Okay, he will. He'll. She will. It will be written as she'll. You will. It will be written as will. You'll. You will. You'll. And now it will. It will be written as it'll. These short forms are very useful when we speak English, having shall or will possessing sentences. Now repeat with me. I shall, I'll. We shall, will. They will, they'll. He will, he'll. She will, she'll. You will, you'll. It will, it'll. In this way we have known two important things, that where shall will be used and where will be used. Okay, and some very basic or important short forms. Now we'll form some basic sentences, and that is very important. Like, before writing some sentences, short forms having not, like shall not, it will be written as shan't. Okay, and will not, it will be written as won't. Now in this way we have completed our short forms. Okay, and there are no short forms related to the structure which we are going to deal today. And now we need to form some basic sentence, like I'll be a doctor. Okay, you must see that the structure which I have written on the board is being followed by the sentences which I am writing on the board. That is, I'll, subject I, shall or will. Okay, and this is be, and this is other word. Okay, it means the structure is followed very properly. I'll be a doctor, मैं डॉक्टर बनूंगा. She'll be a dancer, वह नृतक बनेगी. Ram will be a leader, राम नेता बनेगा. Like this we can form many sentences. Okay, practice with me. I'll be a doctor, मैं डॉक्टर बनूंगा. She'll be a dancer, वह नृतक बनेंगे. She'll be a teacher, वह शिक्षिका बनेगी. She'll be a madam, वह मैडम बनेगी. She'll be a mother, वह माँ बनेगी. I'll be a doctor, I'll be a teacher, I'll be a dancer, I'll be a leader, I'll be an IAS officer, I'll be an editor. Like this we can form many sentences, and these sentences are related to our day-to-day life. That's why it will help
in a spoken English. Now if you have done this work, अगर आपने कुछ बेसिक सेंटेंसेस को फॉर्म कर लिया है, तो आफ्टर दिस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वी नीड टू डू हियर इज दैट, हमें जो करना है यहाँ वो ये है कि आप सबसे पहले ये कर लीजिए पहला स्टेप स्ट्रक्चर, उसके बाद उस स्ट्रक्चर पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आफ्टर दैट all affirmative sentences must be converted into 4 sentences like affirmative, negative, interrogative, negative interrogative, like this. Now practice with me what I am going to do. That is, I'll be a doctor. I shan't be a doctor. Okay, it means मैं डॉक्टर बनूंगा, it means मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा. Shall I be a doctor? क्या मैं डॉक्टर बनूंगा? And you have seen that here the punctuation mark has been changed. Here this is the sign of interrogation. Okay, now shan't I be a doctor? क्या मैं डॉक्टर बनूंगा? One more important thing that I have not told you earlier, that is the sentences which is that, जो sentence है, what should be the expression of our face when we speak that sentence, that is very important. That is, this is a statement, this is affirmative sentence. What should be the expression when we speak this sentence? I'll be a doctor, I'll be a doctor. ये भी हमारा एक स्टेटमेंट है, इसको कहने का भी तरीका होगा आई शांट बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा. लेकिन these two sentences are questions, and what a question expresses, what should be the expression of asking a question, that is very important, and that expression must be seen on your face. Okay, say like me, shall I be a doctor, shall I be a doctor. इससे झलक रहा है कि हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो दिखना चाहिए. इफ दैट इज नॉट सीन, दैट व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट वर्क. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ शांट बी अ डॉक्टर, शांट आई बी अ डॉक्टर, शांट आई बी अ डॉक्टर. इस तरह से पूछने से लगता है कि समवन इज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन, कि कोई मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे तो तब ना वो प्रश्न कहलाया. आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहे हैं और आपके कहने से झलक नहीं रहा है कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है. देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हेनेवर यू यूज सेंटेंस. दैट्स व्हाई हियर हमारा एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और हमें एक्सप्रेशन के साथ बोलना है. तो इस तरह से हमारा तीसरा जो क्लास था, हैविंग स्ट्रक्चर्स, वी हैव कंप्लीटेड. नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस. ओके, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर. मैं नृतक बनूंगा, आई विल बी अ डांसर. हम लोग शिक्षक बनेंगे, विल बी टीचर्स. हम लोग डॉक्टर बनेंगे, विल बी डॉक्टर्स. हम लोग नेता बनेंगे, विल बी लीडर्स. हम लोग बड़े आदमी बनेंगे, विल बी बिग मैन. हम लोग महान बनेंगे, विल बी ग्रेट. हम लोग इस देश का नेता बनेंगे, विल बी द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री. हम लोग विद्यार्थी बनेंगे, विल बी स्टूडेंट्स. हम लोग प्रोफेसर बनेंगे, विल बी प्रोफेसर्स. इस तरह से आप अपने मन से ही कैसे स्टैंड बिफोर द मिरर, आप किसी ऐनक के सामने खड़े हो जाए एंड प्रैक्टिस दैट एट दैट प्लेस. दैट्स यू हैव टू फील समवन इज स्टैंडिंग अगेंस्ट यू. आपके सामने कोई खड़े हैं और आप वहाँ पर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरह से आप एक बार बोलने लगिए. दैट्स एवरीवन विल क्लैप फॉर यू व्हेन यू विल स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश. ओके, नाउ what to do? Here we need to do practice. What is practice? Have one sentence. I'll be a doctor. आप एक सेंटेंस लीजिए, I'll be a doctor, और उसको 4 तरह से बोलिए. I'll be doctor, I shan't be doctor, shall I be a doctor, shan't I be a doctor. ये चीज़ मैंने पहले नहीं किया था विथ एक्सप्रेशन, प्रैक्टिस किया था, लेकिन एक्सप्रेशन वाली बात मैंने बताया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दूसरा सेंटेंस लीजिए, she'll be a dancer, she won't be a dancer, will she be a dancer, won't she be a dancer. आप एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं तो कुछ अलग ही लिरिक्स और कुछ अलग ही रिदम आ जाता है. जैसे राम विल बी अ टीचर, राम वॉन्ट बी अ टीचर, विल राम बी अ टीचर, वॉन्ट राम बी अ टीचर. इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस. जैसे दे विल बी थीव्स, दे वॉन्ट बी थीव्स, विल दे बी थीव्स, वॉन्ट दे बी थीव्स. ओके, और अंतिम में आप इसमें क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन. अंतिम वाला जो, अगर ये 1 2 3 4 है तो 5 और 6 नंबर में आप कह सकते हैं कि जैसे है कि आई बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा. अंतिम में 5 नंबर में कह सकते हैं हम क्या, कि मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा. वाई शैल बी आई डॉक्टर, वाई शैल बी आई अ डॉक्टर, वाई शैल आई बी अ डॉक्टर.
मैंने पिछला वाला गलत बोल दिया था, वाई शैल आई बी अ डॉक्टर, दिस इज राइट, वाई शांट आई बी अ डॉक्टर। इस तरह से बोलने से आप एनहांसमेंट लाएंगे अपने स्पोकन इंग्लिश में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कुछ कर रहे हो तो फ्रीली, व्हेन योर माउथ इज फ्री, यू कैन प्रैक्टिस लाइक I'll be an actor, I shan't be an actor, shall I be an actor, shan't I be an actor, why shall I be an actor, why shan't I be an actor। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, एंड आई होप, आई एम श्योर, आई एम कंप्लीटली अश्योर दैट यू विल स्पीक समवन, sorry, speak one day। Thank you so much, please subscribe to my YouTube channel if you are new, and you can press the bell icon, that's why you can get the notifications all of all the new videos which I upload on my YouTube channel। Thank you so much।